तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में ये पहले क्लास हमारी होगी आज। आज हम बात करेंगे स्टीरियो डिज़ाइन पर कि स्टीरियो डिज़ाइन की क्लासिफिकेशन क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है सभी। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि स्टीरियो डिज़ाइन क्या है और इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंट स्टीरियो डिज़ाइन यानी क्रॉस सेक्शन स्टडी है, कोहॉर्ट है या केस कंट्रोल है, तो हर एक की ऑब्जेक्टिव जो है क्या होगी। फिर एक एक स्टडी की हम कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे और फिर along विद द एडवांटेज एंड डिसवांटेज ऑफ ईच स्टडी। और लास्ट में जो है हम रिस्क रेशो एंड ऑड रेशो जो है ये कैलकुलेट करेंगे और इसकी इंटरप्रिटेशन भी करेंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन इम्पोर्टेंट जो कोर्स है ये आपके कोर्स में नहीं है। खैर हम एक सिंपल सा एक टच दे देंगे, बट द कैलकुलेशन एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिस्क रेशो एंड ऑड रेशो जो है ये आपकी कुरिकुलम में शामिल नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन कि हम रिसर्च क्यों करनी चाहिए। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि कुछ हमारी कुछ नॉलेज होती हैं और उस नॉलेज को अपडेट करने की ज़रूरत है, या हम जो नॉलेज किसी चीज़ किसी एक बारे में हम रखते हैं तो मैट भी वो गलत हो और अभी हकीकत में कुछ और हो, या हम किसी एक फिनोमेना के बारे में बहुत कम जानते हैं एंड वी नीड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स की हल जो है सिर्फ रिसर्च है। सो वाई रिसर्च, रिसर्च जो है ये एक सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन होती है और ये इस रिसर्च की वजह से ही न्यू कंक्लूजन जो है बनते हैं, और या जो है पुरानी जो इंफॉर्मेशन होती है कंक्लूजन होती हैं उसकी कंफर्मेशन हो जाती है। Research is what we do and what we have a question or the problem we want to resolve। जैसे ये तीन क्वेश्चन या प्रॉब्लम जो है हमने पिछली साइड में एक्सप्लेन की। You may already think we know the answer to our question already, but we have to confirm. So again, that will be also called as research। अब स्टडी डिज़ाइन क्या है? स्टडी डिज़ाइन जो है ये एक प्लान होती हैं जो जो प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, जो क्वेश्चन हमारे सामने होती है उसको सोल्यूशन और उसको जवाब जब हम देते हैं प्रैक्टिकली, तो उस प्रैक्टिकल प्लानिंग जो है उस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सॉल्यूशन देने के लिए जो प्लानिंग होती है, जो एग्जीक्यूशन होती है, that all is actually called as the study design। So as we know that there are different types of question and next सेशन में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन के टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन का आंसर एक जैसा नहीं होता, तो हर एक क्वेश्चन के आंसर को हम मुख्तलिफ तरीके से जो है आंसर देते हैं। और यही वजह है कि स्टडी डिज़ाइन जो है दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी डिज़ाइन बेस्ड ऑन व्हाट वी वांट टू अचीव या व्हाट इज आवर प्रॉब्लम। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव पर ही डिपेंड करती हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और उसी के लिए फिर स्पेसिफिक डिज़ाइन हो। तो ओवरऑल अगर हम बात करें स्टडी डिज़ाइन की, so there are two types of descriptive study design and the analytical study design या analytical research or the descriptive research। नाउ इन दोनों में डिफरेंस क्या है? द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज जस्ट द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। कि अगर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं, सो दैट विल बी कॉल्ड एज द एनालिटिकल रिसर्च, एंड इफ देयर इज नो हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सो दैट विल बी कॉल्ड एज द descriptive research। Descriptive research can be population based, which is also known as the ecological or correlational research, and it can be the individual based, and individual based descriptive research that can be a case report, a case series, or it may be a cross-section survey, which simply we call as descriptive cross-sectional study। Similarly, in analytical research, there can be of two types, that is the observational analytical research and the experimental, are also known as the interventional analytical research। एंड ऑब्जर्वेशन, हम पेशेंट्स को कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देती, हम कोई भी इंटरवेंशन नहीं देते। जो कुछ हो रहा है हम एक नेचुरली गोइंग प्रोसेस को हम ऑब्जर्व करेंगे, उसको नोट करेंगे, और आफ्टर द ऑब्जर्वेशन जो है हम उस पर फिर एनालिसिस करेंगे, एंड देन वी विल मेक कंक्लूजन बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशन। सो दैट कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स: द कोहॉर्ट स्टडी, the case control study, and the cross-sectional study। But this time here we will call this cross-section as analytical cross-section study or observational cross-section study। Experimental study, depending on the randomization, if the randomization is present here, it will be called as the randomized control trial. And if there is no randomization, so there will be, or if there may be
एंड नॉन एप्रोप्रिएट रेंडमाइजेशन, तो फिर भी हम इसको क्रॉस एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन कहेंगे। अब यहाँ पे एक चीज जो यहाँ पे डिस्कस की गई है कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन जो है ये कंट्रोल ट्रायल भी हो सकती है और अनकंट्रोल ट्रायल भी हो सकती है। कंट्रोल ट्रायल से मुराद ये है कि जिसमें 2 ग्रुप मिनिमम होती हैं और इसमें कंट्रोल को एक केस के साथ जो है कंपेयर किया जाता है। जबकि अनकंट्रोल ट्रायल वो होते हैं जिसमें एक सिंगल ग्रुप स्टडी डिजाइन होती है जिसमें कंट्रोल नहीं होता, एक ग्रुप होती है और इसको कोई ट्रीटमेंट देते हैं और फिर इसकी प्री एंड पोस्ट एनालिसिस की जाती हैं। सो दैट इज नोन एज द अनकंट्रोल्ड ट्रायल। फिर कंट्रोल ट्रायल जो है दे कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ randomization or randomized control trial or non-randomized control trial. On the basis of objective, we have different study design. So the descriptive studies objective is that if you want to know the distribution of a disease, so we will obviously need the descriptive study. And if you want to develop a hypothesis, and why? Because जब हम एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हैं तो उससे जो इंफॉर्मेशन आती है तो उसका आंसर जो है व्हाट का आंसर होता है, व्हेन का होता है, वेयर का होता है, विच का होता है, बट हु का होता है, बट देयर इज नो आंसर टू द व्हाई। सो व्हाई मीन यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है एंड दैट क्वेश्चन इज एक्चुअली द हाइपोथेसिस। So it means descriptive study design that can be also used to develop the hypothesis. Objectives for the observational and analytical studies, they can be when we want to test the hypothesis and if our objective is to establish the association between two variables. And in the experimental randomization studies, we are establishing the cause or if we want to assess the strength of the association, so these studies can be conducted. These are the different types of question, and this is the study design which can be more appropriate for that type of question. So if we want to know about the burden of illness, so that is simply the cross-sectional surveys. And if we want to prevalence, again the cross-section survey, and incidence ke liye, we need the longitudinal survey, specifically the cohort study. If you want to the causation, risk and prognosis of disease, obviously then we need the observational study design of longitudinal nature, which is case control study and the cohort study, as well as the intervention study design, the randomized control trial. If we want to check the efficacy of the treatment, so obviously randomized control trial. And for the diagnostic test evaluation, most commonly and most appropriate study design is the randomized control study. Otherwise, other study design can also use to check the evaluation of the diagnostic test. And if we want to check the cost effectiveness, so again, the most appropriate study design is the randomized control trial. So this is the hierarchy of the evidence. Meta-analysis and systematic reviews, they are on the top. They have the strongest evidence, and the case report, opinion papers, and letters, they have the weakest source of information, or we can say the weakest source of evidence. So descriptive studies जो होती हैं ये they just describe the phenomena, that don't answer to the why, and that don't check and assess association, that don't check the strength of the association. So generally, the purpose is to describe the variability in a health outcome or to produce or to generate hypothesis. Similarly, the descriptive studies, they involve describing the characteristic of a particular situation, event, or case, or any disease. And ये जो है छोटी लेवल पे भी की जा सकती है, मतलब इन अ सिंगल इंस्टीट्यूट एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में, या जो है प्राइमरी स्कूल टीचर में, या जो है इस तरह यूनिवर्सिटी टीचर्स में, इसके अलावा बैंकर्स में, यानी छोटे स्पेसिफिक पॉपुलेशन में भी की जा सकती हैं और लार्ज पॉपुलेशन पर भी की जा सकती हैं। Ecological studies, sometimes known as the correlational studies, and they actually compare outcome between groups but not individuals, and that's why they are known as the population-based study design. There are two types of ecological studies, the geographical and the temporal. In the geographical, the health outcomes and the risk modifying factors are averaged for the population divided along geographical lines. And in the temporal, the health outcomes are examined for seasonal variation or trends. Geographical lines mean
when the study is conducted on the basis of boundaries between the two nations or between the two provinces. So that would be actually called as the geographical ecological study design. These are some of the example from the literature of that ecological study design. And this is a study from 18 European countries and having 4,400 small areas. So this is an example of the ecological study. This is another example of the ecological study. Case report क्या होती है? Case report when we have a very unique, atypical, just a rare case, और इसको हम एक सिंगल केस होता है, सिंगल पार्टिसिपेंट होती है स्टडी में, और फिर हम इसको जब रिपोर्ट करते हैं, so they would be called as the case report. This is an example of the case report from the physical therapy for low back pain, and the focus on McKinsey method for the diagnosis and treatment, a case report. This is another example of the case report. केस सीरीज जब सेम पेशेंट जो हैं ये एक चीज ज्यादा हो जाते हैं विद सेम डायग्नोसिस और ये ऑलमोस्ट 9 या 10 तक जाते हैं तो फिर इन तमाम को डेटा को कलेक्ट करके और एक स्टडी डिजाइन में आप इनको डिस्क्राइब करते हैं तो देन दैट इज नोन एज द केस सीरीज. The case series is just like the case report, but the only difference between these two is that case report, there is one participant in the case report, and there are 2 to 9 or 2 to 10 participants in the case series. So this is an example. Is the physical therapy improves the lower limb muscle strength but not function in an individual with amyotrophic lateral sclerosis, a case series study. This is another case series study, manual therapy following immobilization for stable ankle fracture, a case series. So these are the advantages and disadvantages. As these are the different types of the descriptive study design, and one of the best objective and the best benefit and advantage of the descriptive is that they can be used to generate the hypothesis. Similarly, they can give us the information regarding a very rare disease and which is not very common among the population, and there is no such knowledge available. So this case report or case series, they can give us information regarding that rare or atypical case. Similarly, it characterizes the average for a disorder. The disadvantages are that they cannot study the cause and effect relationship, which is actually studied in the best way in the cohort study design. Similarly, they cannot assess the disease frequency because the number of population, the number of subjects in these two study design, that is very limited. That is 1, or that may be 2, 3, or up to 9 or 10. So this is the classification of the analytical studies. Cohort study design, case control are the cross-sectional. And there are some terms which should be very clear to all of you. This is the experimental or observational. As we already discussed, these two terms is non-randomized. Already we have taken a session on that as well, what we mean by the randomization. Longitudinal or cross-sectional. Longitudinal mean when you collect the data again and again 2 or more than 2 times. किसी से आप डेटा कलेक्ट करते हैं लेकिन और डेटा जो है आप 2 या 2 से सेम डेटा जो है आप 2 या 2 से ज्यादा बार कलेक्ट करते हैं, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल. आप एक क्वेश्चनर है उसकी 2 सेक्शन है, आप एक दफा आप विजिट करते हैं, एक सेक्शन का डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर दूसरी बार जब विजिट करते हैं तो आप जो है दूसरे सेक्शन का डेटा ले लेते हैं. सो दैट इज अगेन क्रॉस सेक्शनल स्टडी, नॉट लॉन्गिट्यूडिनल, बिकॉज आपने डिफरेंट स्टडीज जो है मुख्तलिफ टाइम पे कलेक्ट किया है. तो अगर आप सेक्शन है आपने एक बार कलेक्ट कर दिया, वही सेक्शन है आप दोबारा इनसे कलेक्ट करते हैं, फिर दोबारा तीसरी बार कलेक्ट करते हैं सेक्शन है, so that will be then called as the longitudinal study design. It means when you collect gather the data again and again, the same data, same question from the same participant, that will be called as the longitudinal. And when you gather the data once, that will be called as the cross section. Prospective and retrospective, that will be discussed, and when we will discuss the cohort study design, descriptive and comparative. Already we have talked about these two terms. Cohort study designs, the observation of the cohort over time to measure outcomes, they can be also called as the prospective study design, the longitudinal study design, or the follow-up study design.
They are the best study to check and to assess the incidence of a disease. And if there is only, the objective is only to find out, to determine the incidence of a disease, sometimes these studies are also known as the descriptive cohort study design, in which there is no hypothesis testing, there is no assessing of any situation between the two variables. Just the objective is find out that how many uh, people are having that disease in a specific time frame from that point to that point. So within between these 2 points, what is the exact frequency of a disease, they will be called as the incidence. And if we are only going to find out the incidence, then that will be called as descriptive cohort. But if we also add some inferential statistic, if we add the association between two variables and we are going to assess them, then they will be called as the analytical cohort study design. So they can be prospective if we are going to collect the data in the upcoming days, and we are going from today, and then we will collect data tomorrow and next day tomorrow and so on. So that will be called as the prospective. Retrospective, when we are working on the data which has been already collected, or which when we ask the question from the participant uh, from the past till that, it means suppose मिसाल के तौर पर आप एक बंदे से आप क्वेश्चन करते हैं कि जब आप पे आपको ये डिजीज हुई, जब आपको डिजीज तकरीबन 3 साल पहले हुई थी, तो आप क्या कर रहे थे, या आप जो है एक्चुअली आपको कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स दी, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं दे विल बी कॉल्ड एज द रेट्रोस्पेक्टिव। यानी अगर आप पीछे जाते हैं और 2012 से व्हेन ही वाज एक्टिव, व्हेन ही वाज नॉर्मल, वहां से जो है फिर आप डेटा कलेक्ट करते हैं आज तक, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द रेट्रोस्पेक्टिव। और अगर दोनों डायरेक्शन पे आप जाते हैं, so that will be called as the इनवर्ड डायरेक्शन। हमने इन तीनों पर डिटेल से एक सेशन ऑलरेडी की थी, व्हाट वी मीन बाय द प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव, और इस पे एग्जांपल भी हमने दी थी कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमनली एग्जांपल वर्ल्ड वाइड जो मशहूर स्टडीज की प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव एंड इनवर्ड डायरेक्शन। So that's why we are going to skip and don't have in a detailed discussion on these terms. You have to be very clear and prospective। ये हम आगे की तरफ जाके आने वाले वक्त में डेटा कलेक्ट करते हैं, और ये हम पीछे जाके कई साल पहले जाके जब उनको डिजीज जब पहली बार इनको हुई थी, यानी उनकी जब इन्हीं द पर्सन द सब्जेक्ट इज बिन हेल्दी, वहां से फिर डेटा शुरू करते ही यहाँ तक आने आते हैं, दे विल बी कॉल्ड एज द रेट्रोस्पेक्टिव। So this is actually that mechanism and how we can conduct this study. So at the baseline, that can be divided on the basis of risk factor. So those who are exposed to the risk factor, they will be called the exposed group, and those who are not exposed, they will be called as the non-exposed group. And then आगे जाके फिर जो है हम इस पे इंसिडेंस ऑफ द डिजीज देखते हैं। एक्सपोज ग्रुप में what was the incidence of that specific disease, and non-exposed में what was the incidence of the disease. It means at the start of the study and cohort study there is no one ill, सब जो healthy होते हैं, they are just divided on the basis of exposed to a specific respect, and at the end तुम दोनों ग्रुप में हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे कि आउट ऑफ टोटल जो है कितने लोग जो हैं दे आर देयर आर द विद द डिजीज एंड दे आर still healthy, they don't have the disease. It means in dono studies, in dono group, we will clearly have the incidence, and that's why the cohort study are the best study to find out the incidence of a disease. So relative risk, we have already discussed that previously, and it is not so important, not in your curriculum, so just skip this relative risk. एडवांटेजेस क्या है कि ये रेयर एक्सपोजर के हम यूज कर सकते हैं, एंड इट्स वेरी यूजफुल फॉर दैट। It is useful if you want to assess more than one outcome. If you want to check the incidence and to assess the incidence rate, this is the best study. Temporal relationship जो है, temporal relationship mean that is the cause effect relationship, and यानी cause क्या है, disease क्या है, if we are clearly can distinguish between these two, so that will be a clear temporal relationship. A prospective minimizes bias in the measurement of exposure. The disadvantage of cohort study design are they are not good to study the rare outcome.
because might be at the end after 3 or 4 or up to 10 years, might be we don't have any such entry. At retrospective, they will rely on the adequacy of the records, and that's why there may be some recall biases as well. Exposed may be followed more closely than the unexposed, as we are assessing the group which is exposed to the risk factor more detail and more in detail and more closely than the unexposed. So that may be have a biasness in the observation. A prospective, they can be very expensive and slow, and that's why they need a high amount of resources. As they are follow-up studies, the validity of the result is highly sensitive to lost follow-up because there is too much time. लंबी स्टडीज होती हैं, सालों सालों चलती रहती हैं, तो दैट्स वाई लास्ट या विड्रॉल जो है या लास्ट फॉलोअप जो है ये बहुत ज्यादा हो सकती है बिकॉज ऑफ इन योर रीजन. Case control studies, they are opposite of the that cohort study design. And the cohort हमने कहा था कि सारे participant just start में they will be healthy and they will be just differentiated, they will just separated from each other on the basis of exposing to exposure to a specific risk factor. And case control studies, there will be two groups. One group will be called as the case, the other is the control. Case means the disease people, control means the healthy people. So in a specific area, you will just compare the people living in the same area and who are the disease with a specific, who are having the disease and who don't have the disease. So we will just check the habits and all other characteristics of these two groups that actually what is the reason of that disease. So in the cohort study design, हमेशा जो है हम काज से डिजीज की तरफ जाएंगे एंड इन द केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन जो है हम हमेशा जो है डिजीज से काज की तरफ जाएंगे. ये डायरेक्शन जो है दोनों में अपोजिट है. सेकेंडली मोस्टली प्रोस्पेक्टिव होती हैं. अगर हम आगे की तरफ डेटा कलेक्ट करते हैं या माजी से डेटा कलेक्ट करते हैं पास से, फिर भी जो है ये प्रोस्पेक्टिव होती हैं कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द प्रोस्पेक्टिव डिजाइन. व्हाइल केस कंट्रोल हमेशा जो है रेट्रोस्पेक्टिव होती है. उनका सैंपल साइज थोड़ा सा स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू द कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन. टाइम कम लगता है, रिसोर्सेज कम लगती हैं इन द in the case control study design as compared to the cohort study design. So we are going to skip the order issue. So this is actually that model of how we can conduct the case control design. So हम जो है this is the study population, this is the today we are here. So हम जाएंगे past में, माजी में जाएंगे और वहाँ पे जो जो दो ग्रुप्स होंगे ना, एक ग्रुप होगा जो डिजीज के साथ होंगे केस होगा और एक विदाउट डिजीज द कंट्रोल होंगे. फिर हाँ इसमें हम देखेंगे कि इसमें डिजीज में इनकी क्या वजह थी, एक्सपोज क्या सिचुएशन थी और जो नॉन एक्सपोज थे तो क्या इनका जो है देखेंगे कि इधर दिस एक्सपोज जो थे क्या ये ज्यादा थी. यहाँ पे सारे के सारे जो है दे वर इन द एक्सपोज and if the disease people mostly they were in the non-exposed to that respect, which will mean that this is not actually the cause and etiology of this disease. Similarly हम इसमें भी जो है cause देखेंगे exposed or non-exposed की situation. These are example of the case control study design. Another example. These are another example. इसकी जो advantage है that is actually opposite of that the cohort study design. Unlike the cohort study design, they can be carried out very quickly and quite cheaply, useful for the rare disease and outcome, while that is a cohort studies and they are not useful to assess the rare disease or rare outcome. In the case control study, we can study multiple exposure for a single outcome, and we can study disease with long latent period. And this is one of the best advantage of the case control study design, as that will just save our time and all other resources. The main disadvantage of the case control study design is the selection of the control, because we have to compare it with the case, and sometimes there may be over matching, sometimes they may under matching with the case, and that may create some biasness. As these studies, they are always retrospective, so in most of the cases, there are high chances of the recall biasness. Selection bias, especially regarding the control, we can have this selection bias. Difficult to establish the correct temporal relationship. The best study which is more appropriate to establishment of that
temporal relationship, this is the course theory design. And the case control theory design, the temporal relationship may be biased because of their recall bias. That they are not good for the rare exposure, while the course theory design, they are very good to assist and to check for the rare exposure. Cannot usually be used to estimate incidence rate or the prevalence rate and can only produce one outcome. Cross-section study design, they are very simple in which we will collect the data in different ways. हमने already एक session लिया था, if you all recall that, कि हम data किस तरह collect कर सकते हैं, हम email के जरिए collect कर सकते हैं, questionnaire email करते हैं, Google form के तरीके से करते हैं, या जो है हम data जो है ये interview की जरिए हम कर सकते हैं, या सिंपल उनको क्वेश्चनेयर हार्ड में दे देंगे एंड दे विल फिल फ्रॉम देयर सेल्फ. सो ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं जिनसे हम क्रॉस सेक्शन स्टडी में डेटा कलेक्ट करते हैं. एक ही टाइम पे हम बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट करते हैं, एक ही टाइम पे हम कास एंड एक्सपोजर, कान एंड डिजीज सॉरी, दोनों के दरमियान जो है हम दोनों का डेटा जो है हम कलेक्ट करते हैं इन क्रॉस सेक्शन. एंड दैट्स वाई ये उन दोनों से अलग है. यानी कोवर्ट स्टडी डिजाइन में हम हमेशा से जाएंगे फ्रॉम द cause toward the disease, in the case control from the disease toward the cause. जबकि in cross section study हम एक बार डेटा लेंगे और डेटा about the cause and about the disease ये दोनों एक साथ लेंगे. And that's why in the cross section one of the disadvantages that we don't know what is the cause, what is the disease. So as suppose we have two data A and B, we don't know A is causing the B or B is causing the A. These are some examples of the cross section. The advantage of the cross-sectional design is that outcomes and exposure measured at the same time. And again, as we discussed earlier, that uncover a situation for the study, and that's why we can say that they can be used to generate the hypothesis. Useful for the hypothesis generation, we can keep as there is no follow-up. We have to collect data only once from the subjects, from our participants. Just try to determine the prevalence. Questionnaire interview based, useful for assessing the predictive attitude, knowledge, belief, utilization of service, etc. And these are the disadvantages. One of the disadvantages is that it's really difficult to collect data from a very large population. And as we are going to collect a number of different data, so and another cross-sectional disadvantage is that there is no cause and effect relationship. There is no temporal relationship, just like the cohort design. There is no temporal relationship. So they are not suitable for studying rare disease or disease with a short duration, unable to measure the incidence. Randomized control trial, they will be discussed in the next lecture, inshallah. थोड़ा सा एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि randomized control क्या होती है. These are specific studies which are the type of information studies जिसमें पेशेंट को एक स्पेसिफिक डिजीज के साथ जब होते हैं तो उनको एक ट्रीटमेंट दी जाती है और वो ट्रीटमेंट हम दूसरी ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट लुकिंग रिसीव हो जिससे हम कहते हैं कि लुक लाइक ट्रीटमेंट उनके साथ हम कंपेयर करते हैं और फिर देखते हैं कि इनमें से जो हम एक्सपेरिमेंट जिस ट्रीटमेंट को हम कह रहे हैं कि दिस इज मोर effective than this one, तो फिर हम आगे जाके रिजल्ट के बेस पर फिर डिसाइड करते हैं कि इधर which treatment is more effective than the A or the B. So they are experimental and control group. They both are allocated into both groups, the patient, the participant. They are assigned to these two groups randomly. And what are the different methods of randomization? Already हम डिस्कस भी कर चुके हैं क्लास में और आगे भी जो है हम थोड़ा सा एक सेशन में रिव्यू दे देंगे कि जो है RCT में हम जब रेंडमाइजेशन करते हैं तो किस तरह करते हैं और फिर दोनों की फिर एनालिसिस होती है और फिर कंपैरिजन होती है विच ट्रीटमेंट इज मोर इफेक्टिव, कौन सा ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा है टू ट्रीट दैट डिजीज. तो ये तीन रीजंस हैं वाई randomization to ensure compatibility and to avoid selection bias and to reduce the confounding factor. We will discuss the randomization, specifically the types of randomization, and as well as the types of RCT, specifically, more specifically, classification on the randomized control trial in the next session. That was all about study design. Thank you so much to all of you.